मीडिया में तो काफ़ी हाइप रहती है, फॉर्मर प्लेयर्स कमेंट करते हैं, बट एक्चुअली में इंडियन टीम के प्लेयर और पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स जो हमने अभी तक देखा, आपके जैसे रिलेशन आप लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, बाबर और विराट की तस्वीरें देखी, प्योरली पर्सनली मतलब प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडो पाक राइवलरी और इतना हाइप अप किस तरह से आप लोगों के दोनों टीमों के बीच किस तरह के जी, इस चीज़ से हम डेफिनेटली भाग नहीं सकते। वो राइवलरी और जो इमोशन है वो दिख जाता है या फील हो ही जाता है आपको एज अ प्लेयर, एंड यू कांट शाई अवे फ्रॉम इट और यू कांट रन अवे फ्रॉम इट। एंड एज यंगस्टर्स वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड to being in such clashes, and when you get an opportunity to be in a clash like in India Pakistan, I've been part of it a couple of times in 2019 World Cup and last year. So it was, once you cross the rope, it just becomes a game of bat and ball. Up you see the opposition as an opposition, and you try to be your best on that particular day, and you try to focus on yourself more than the opposition. And I'm sure it is the same mindset as players for either of the teams, either side. I mean, if for an Indian player it's the same, I'm sure it's the same for a Pakistani player. He's not going to worry about कि क्या बातें हो रहा है, क्या इमोशंस चल रहे हैं ग्राउंड में. Obviously that the vibe is great, everyone feels more 100% से थोड़ा 10% ज़्यादा देते हो आप in a game like that. But apart from that, I think we still remain players, whether it is Indian players, Pakistani players. We love this game, we played this sport, and सबका वही struggle रहा होगा, and we've obviously played them. I played against a few of them in the under-19 World Cups, and I've followed their careers over the years, and it's just great to see that after so many years they're living their dream of playing for their country. We're living our dream of playing for our country, and before the game starts or after the game is done, everything goes away and you become normal players and normal people, and you try to learn from each other, talk to each other, share each other's experiences, and it's always been friendly that way. राहुल, जो विमल सवाल कर रहे थे, इसी को आगे बढ़ाते हुए, कल रात जो हमने देखा कि आप और शाहीन शाह अफरीदी चैट कर रहे थे, तो एज ए प्लेयर कैसा फील करते हैं कि सितंबर में शाहीन का जो स्पेल था उसमें एक विकेट आपकी भी थी, और अब वो प्लेयर इस स्टेज से गुजर रहा है, तो एज ए प्लेयर वो क्या फीलिंग होती है इंडियन पाकिस्तान राइवलरी को सामने रखते? सर ऐसे करेंगे मिस, ऑब्वियसली हम, एटलीस्ट मेरा माइंडसेट था, हम लोग का सबका माइंडसेट था कि यू प्ले अ क्वालिटी बॉलर. वीव सीन कि शाहीन शाह अफरीदी लास्ट 1-2 साल में कैसे परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, एंड ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, इज़ अ क्वालिटी बॉलर, एंड लेफ्ट आर्म सीमर्स right now in world cricket are the most dangerous, and they're causing most trouble for the batters. So अगर वो खेलते तो हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है playing against a quality bowler like that and challenging ourselves. But unfortunately he's injured, or as players हम सब इंजरी से गुजरते हुए आए हैं. स्पेशली फॉर मी, मैं अभी 2-3 महीने से मैं एकेडमी में रहा हूँ. आई वाज डूइंग रिहैब, तो इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम फॉर अ प्लेयर, एंड द पेन यू गो थ्रू, एंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ मिसिंग गेम्स, स्पेशली सच अ बिग टूर्नामेंट. इवन ही वुड हैव wanted to be part of this, or even he would have wanted to play the India-Pakistan game. So you just share a little bit of concern, and thoda bahut, from your experience, you talk to him, that's it. More than that और कुछ होता नहीं. T20 की बात होती है तो सब सिर्फ चौके छक्के के बैटिंग की बात करते हैं. आप कप्तान रहे हो, अभी बॉलर्स के रोल के बारे में आप क्या कहोगे? हमारे साइड के बॉलर्स के बारे में आप क्या कहोगे? Obviously roles बहुत टाइम से already, I think something that we've done really well this time is कि जो भी प्लेयर्स है उनको एग्जैक्टली बोला गया है कि क्या एक्सपेक्ट करता है टीम, और क्या सिचुएशन में उनसे बॉलिंग डलवाया जाएगा, या क्या सिचुएशन में एज अ बैट्समैन यू विल बी सेंट इन, और कैसे सिचुएशन आपको फेस करना पड़ेगा. एंड वी ट्राई टू प्रिपेयर ईच प्लेयर द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड द सेम विथ बॉलर्स. आप अगर उनको क्लैरिटी दोगे और उनको वो सिचुएशन में बार बार डालते रहोगे, तो ऑब्वियसली लाइक आई सेड प्रीवियसली, मिस्टेक्स तो होता रहेगा, बट यू लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, एंड दैट इज़ व्हाट वी
I think Rohit and Rahul have been very clear that they've allowed players to challenge themselves in the middle, make mistakes, not be worried about making mistakes. Have given them that freedom to learn from their own mistakes, and एक या दो matches से judge नहीं किया गया, so which is great to see, and that is what we always wanted. That is how we always wanted to prepare and build a strong unit before the World Cup. So it was great to see, even मैं TV पे देख रहा था 2 महीने से, तो just to see that players were given opportunities again and again, even though they've had a couple of rough games, was good to see. As a player आपको उस चीज़ से बहुत confidence मिलता है, आपको दिखता है कि टीम कैप्टन और कोच और एज अ टीम आप एक प्लेयर को बैक कर रहे हो, then he also feels that confidence, and that is what takes a player from being a good player to an excellent player for the team. And as a player, you'll always start putting your team ahead of your personal goals. So that is where we wanted to be as a team, and I think we've done that really well in the last 7-8 months after the last World Cup, and we still have a month and a half till this World Cup. So we'll try to do that, and this is our learning from previous mistakes, and this is what we wanted to correct this time. और वही चीज़ हम लोग ने किया, so it's been good to see, and other players are reacting really well to that. तो वही चाहिए हम लोग को as a team.